नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। तो क्या मार्केट का ट्रेंड फर्दर नीचे की तरफ रह सकता है? इंडेक्स के लिए कौन से की लेवल्स रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, और कौन से सेक्टर्स आज रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकते हैं ट्रेड में? विल डिस्कस दैट इन टुडेज पॉडकास्ट। फर्स्ट अप, कमिंग टू द अपडेट इन द ग्लोबल मार्केट्स इन ट्रेड yesterday। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट्स में भी एक करेक्शन देखा गया आफ्टर द शार्प रैली विच हैज़ बीन सीन इन द यूएस मार्केट्स पोस्ट द presidential elections. The Dow declined 0.86% yesterday. The S&P 500 eased 0.29% lower, and the Nasdaq edged down by 0.17%. The major trend of the S&P 500 is bullish as of now. It is quoting above its short-term and long-term moving averages. Talking about crucial levels, the zone of 5,920 will act as the immediate support for the index, while on the upside, the zone of 6,020 will act as the crucial hurdle. अगर ब्रेंट ऑयल की बात करें तो the ब्रेंट ऑयल इंडेक्स क्लोज्ड for the third consecutive session on a negative note. Considering the current chart structure, it is likely to continue its southward journey and test the levels of 69 in the short term. Coming to the quick update regarding the dollar index. So the dollar index extended its upward momentum, reaching its highest closing since June 2024 at 105.96. In the short term, it appears that it is poised to test the levels of 106.50. Now coming to the update regarding our markets in trade yesterday. So the benchmark index Nifty extended its downward trend, closing below 23,900 mark with a decline of over 1%. On the daily chart, if we see, it has formed a substantial bearish candle signaling selling pressure. The index is now trading 3% below its 50-day EMA, highlighting increased selling pressure. Additionally, the daily RSI remains in bearish territory and continues to slide, reinforcing the downward momentum. Coming to the levels, the zone of 23,770 will act as the immediate support for the index. Any sustainable move below the levels of 23,770 will lead to an extension of the selling pressure up to the 200-day EMA level, which is currently quoting at 23,542. On the upside, if we see, the resistance mark is currently placed at 24,050. Among the constituents of the Nifty index, only 2 stocks have witnessed long build-up yesterday. 5 stocks witnessed short covering rally, while 25 stocks have witnessed short build-up and 18 stocks witnessed long unwinding. अगर ऑप्शन चेन की बात करें जो कल की एक्सपायरी का है, 24,000 और 24,100 के स्ट्राइक में डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग देखा जा रहा है, वाइल पुट साइड पे 23,800 और 23,700 के स्ट्राइक में OI देखा जा रहा है. कमिंग टू दी वीकली सीरीज़ PCR जो करेंटली 0.51 पे है, और जो मंथली सीरीज़ का है नवंबर सीरीज़ का PCR करेंटली स्टैंड्स एट 1.12. कमिंग टू दी अपडेट रिगार्डिंग बैंक निफ्टी. तो कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में भी हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वेर इन द इंडेक्स क्लोज्ड एट लेवल्स ऑफ 51,157 विद अ कट ऑफ 1.39%. This correction pushed Bank Nifty below its 100-day EMA, signaling a bearish outlook from the short term. Going ahead, the zone of 50,700 will act as the immediate support for the index. Any sustainable move below the levels of 50,700 will lead to further selling pressure in the index. In that case, it is likely to test the levels of 50,300. On the upside, the zone of 51,500 will act as the immediate hurdle. अगर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के बारे में बात करें जो आज का एक्सपायरी का है, 51,500 और 51,700 के स्ट्राइक्स में डिसेंट कॉल राइटिंग देखा जा रहा है, वाइल ऑन द पुट साइड 51,000 और 50,000 के स्ट्राइक्स में डिसेंट अमाउंट ऑफ OI बिल्डअप देखा जा रहा है. कमिंग टू दी PCR आज के एक्सपायरी का, इट करेंटली स्टैंड्स एट 0.55, वाइल दी मंथली सीरीज PCR स्टैंड्स एट 0.88. कमिंग टू द की मार्केट इंडिकेटर्स. तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली एडवांस डिक्लाइन रेशियो वॉज टिल्टेड इन फेवर ऑफ द डिक्लाइनिंग काउंटर्स. कमिंग टू द की सेक्टर्स इन फोकस. तो रेशियो चार्ट के हिसाब से अभी भी निफ्टी IT जो हम लोग बता रहे हैं लास्ट 3-4 सेशन से स्ट्रॉन्ग और आउट परफॉर्म कर रहे हैं. वी एक्सपेक्ट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स टू रिलेटिवली आउट परफॉर्म इन द शॉर्ट टर्म.
while the sectors that are likely to underperform are Nifty FMCG, Nifty Auto, Nifty Media, Nifty PSC, Nifty CPSC, Nifty Metal, Nifty Oil and Gas. Coming to the FI DI data, so FIs have been constant sellers in our market right from the October series, and in trade yesterday as well, they sold to the tune of 3024 crores, while DIs purchased to the tune of 1854 crores. That's a wrap of today's edition of the podcast. Thank you for regularly tuning in. Do tune in tomorrow for more market update and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.